सर थोड़ा बहुत पढ़ा है लेकिन समझ नहीं है। समझ तो नहीं आई लेकिन पढ़ा तो है ना। जी जी हाँ। जी अभी सिर्फ 18 स्टूडेंट्स हैं। नाश्ता किया हुआ है कि नहीं? यस सर, किया हुआ है। सस्ता यस वाला सर। किया है सर। या ब्रेक में करेंगे? सर आपने करना है तो छुट्टी के करिए। बाद ही करेंगे। आज मुझे पता है जल्दी छुट्टी होगी। क्यों? आपको कैसे पता है? सर सर आज आप थके थके लग रहे हैं। आज मौसम आज मौसम चेंज हो गया ना सर, इसलिए। अच्छा ये बुरा है। बहुत अच्छा मौसम है सर। हाँ, तो जो पिशावर और इधर उधर बैठे हैं उनका मौसम तो अच्छा नहीं है ना। सर अब तो बात का बहुत जो आज आज मौसम है ना सर, आज क्या सर बारिश। पेशावर का भी बहुत बेहतरीन मौसम है। बारिश पिशावर ही का हो रही है सर। अच्छा माशाल्लाह, चले फिर तो लंबी क्लास लेंगे, मैं अच्छा मौसम है। सर अभी तो छोटा क्लास ले एंजॉय ताकि करने निकले मौसम लेना एंजॉय आज तो। करें। मौसम एंजॉय करके क्या करोगे? सर इतनी बहुत सर आप नहीं दिनों बाद समझते। तकरीबन। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे कहा तो था कि पढ़ के आए, अगर पढ़ के आए होंगे तो ज़्यादा जल्दी समझ आएगी। जी फॉन्ट साइज ठीक है? जी सर। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Simply, what is filtering or what is a filter? So generally, we say filter is a device or a system that is used to remove noise. What is noise? Noise is simply an unwanted frequency or unwanted signal. So from any signal, if we remove something or we want to remove some frequency, so generally a device or a system that is used is a filter. So generally in electrical systems, filters are implemented by the use of RLC systems, that is the resistor, inductor, and capacitor. RC filters, RL filters, RLC filters. So here we simply say in many applications, it is of interest to change the relative amplitudes of frequency components in a signal, or perhaps eliminate some frequency components entirely. A process is referred to as the filtering. So LTI systems are used to implement filters. So LTI systems that change the shape of spectrum are often referred to as the frequency shaping filters. अब शेप चेंज करने का क्या मतलब होगा कि कुछ फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स का आप एम्पलीट्यूड कम करें या एम्पलीट्यूड ज़्यादा करें, तो दैट चेंजेस द शेप। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑडियो सिस्टम में वॉल्यूम कंट्रोल की बात करते हैं, तो वॉल्यूम कंट्रोल इज़ बेसिकली अ फ्रिक्वेंसी शेपिंग फिल्टर, कि उसमें जितनी भी फ्रिक्वेंसीज हैं उन सब का एम्पलीट्यूड एक स्पेसिफिक रेशो से या कम होगा या ज़्यादा होगा। So similarly, we say systems that are designed to pass some frequencies essentially undistorted and significantly attenuate or eliminate others. Those are referred to as a frequency selective filters. So basically here we say there are two types: frequency shaping filters and frequency selective filters. Frequency shaping filters means कुछ फ्रिक्वेंसीज का एम्पलीट्यूड कम करेंगे, कुछ का ज़्यादा करेंगे। जबकि frequency selective filters में we say we either significantly attenuate or
eliminate. Significantly attenuate का मतलब क्या है? The amplitude is so much lower that presence of that frequency does not affect the system. As we know from the previous equations that output of LTI system is equal to the AK, these are the Fourier series coefficients, into h of jk omega naught e raised to the power jk omega naught. And for discrete, we say y of n is equal to ak times h of e raised to the power jk omega naught into e raised to the power jk omega naught n. So in these two equations, basically h of jk omega naught and h of e raised to the power j omega naught represents the frequency response of the system. The Fourier series coefficients of output of LTI systems are those of the input, means coefficients of the input multiplied by the frequency response of the system. So LTI system में आपको output पे जो भी मिल रहा है उसमें जो change आ रही है, it is basically because of the frequency response of the system, h of jk omega naught or h of e raised to the power jk omega naught. Because we say outputs पे Fourier series coefficients of output of LTI system are those of the input multiplied by the frequency response. Similarly, we say filtering can be conveniently accomplished through use of LTI systems with appropriately chosen frequency response. कि किस किस्म का frequency response होना चाहिए, that is h of jk omega naught or h of e raised to power jk omega naught. And the frequency domain methods provide us with the ideal tools to examine this very important class of applications. We consider a very short frequency shaping filters are not the part of this course in detail because they are mostly related with the image processing. But here we simply consider an example. This is taken from book. One application in which frequency shaping filters are often encountered is audio system. For example, audio system जो आपके पास मोबाइल फोन्स में है, डेस्क में है, कंप्यूटर सिस्टम्स में है, लैपटॉप्स में है, everywhere. So here we say that LTI filters are typically included in such systems to permit the listener to modify the relative amounts of low frequency energy known as bass and high frequency energy known as treble. These filters correspond to LTI systems whose frequency responses can be changed by manipulating the tone controls. Also in hi-fi audio systems, a so-called equalizing filter, or generally we say equalizer, is often included in the preamplifier stage to compensate for the frequency response characteristics of the speakers. So overall, these cascaded filtering stages are frequently referred to as the equalizing or equalizer circuits for the audio systems. So generally आपके पास जितने भी audio systems हैं basically उनमें काम यही है कि वो frequency को control कर रहे हैं, different frequencies उसमें given है. Human audible frequency ranges from 20 Hz to 20 kilohertz. तो आपके पास जितने भी टोन कंट्रोल्स हैं they range from 20 Hz to 20 kilohertz. So different instruments have got different frequencies. So if you want to increase the amplitude of one of the frequency and decrease the other one, so you have got the tone controls or different switches in that equalizing circuit. The second class of frequency shaping filters often encountered is that for which the filter output is a derivative of the input. अब derivative को generally हम क्या नाम देते हैं circuits के case में, we say differentiator. So differentiator is the term that is used to differentiate between two things. So here we say when use the term derivative or
differentiator. So basically it differentiates between the low frequencies and high frequencies. How we say differentiates? So with the of the form x of t equals to e raised to the power j omega t. Initially we said x of t is e raised to the power s t. Then we considered s is equal to sigma plus j omega. We said real part equals to 0. So s is equal to j omega. So here we say input x of t is e raised to the power j omega t. So derivative of e raised power j omega t results in j omega into e raised to the power j omega. So using the eigenvalues, eigenfunctions, we say that initially y of t is equal to h of j omega multiplied by the input. So here we say that h of j omega equals to j omega. So if you say h of j omega is equal to j omega, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका magnitude equals to omega, and what is the angle? 90 degrees. j omega, j equals to 90, ठीक है, और पाई बाय 2. So h of j omega अगर आप इसको इसकी इक्वेशन की फॉर्म में लिखें, कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय द angle. So magnitude of this term equals to omega and angle equals to pi by 2. So if we plot this say in a MATLAB, so generally differentiator का नाम से clear है कि it creates a difference between low frequencies and high frequencies. अगर आप इस फंक्शन को प्लॉट कर दें, लेट्स से ओमेगा इज बिटवीन -5 and +5, we say h is equal to j omega. So we say use the simply subplot 2 1 1, plot omega comma absh. Absh gives us the magnitude. Similarly x label, y label, title, subplot 2 1 2, plot omega angle of h. Angle के लिए आपने पूरी spelling लिखनी है angle of h. Again x label, y label, title and grade. So if you plot this, आपको जो फिगर मिल रही है, अगर आप इस फिगर को देख लें, so h of j omega equals to omega, ठीक है. So omega की वैल्यू अगर 1 से कम है तो आउटपुट पे मैग्नीट्यूड आपको क्या मिलेगा? लेट्स से इफ ओमेगा इक्वल्स टू 0.1, so output will be equal to 0.1 times the input frequency, which is also 0.1. So 0.1 multiplied by 0.1 results in 0.01. So means कि जो आपके पास low frequencies हैं, they will be further lowered. And say जो frequency omega is equal to 2 है, it will be multiplied with 2 units and the output will be 4 units. Similarly, अगर input frequency equals to 3 units, output will be equal to 9 units. Because we say h of j omega is equal to omega. तो output signal किसके equal था? From this equation, we say outputs are equal to the input frequencies multiplied with the frequency response. तो इनपुट पे जो भी फ्रीक्वेंसी आएगी, आउटपुट विल बी इक्वल टू ओमेगा टाइम्स that frequency. So shortly we say low frequencies are multiplied with the lower amplitudes and high frequencies are multiplied with the higher amplitudes. तो इससे क्या होगा, जो लो और हाई का डिफरेंस है, it will become more clear. So differential, as the name says, it gives you a difference between the low and high frequencies.
थोड़ा सा इसको पढ़ लें. So we say h of j omega is a complex in general, and in this example in particular, h of j omega is frequently displayed as in the figure as separate plots of h of j omega and angle of j omega. The shape of this frequency response implies that complex exponential input will receive greater amplification for the larger values of omega and lower amplification for the lower values of omega. अब ये कहाँ पे यूज होते हैं? Consequently, differentiated filters are useful in enhancing rapid variations or transitions in a signal. अब transitions basically we say these are the changing points. कि आप लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट से हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स में जा रहे हैं, चाहे वो कलर्ड इमेज है या ब्लैक एंड वाइट इमेज है. तो आपके पास जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं, जो चेंजिंग पॉइंट्स हैं, तो जहाँ पे चीज़ें स्मूथ चल रही हैं वी से दे आर द लो फ्रिक्वेंसीज, और जहाँ पे ट्रांजिशन ज़्यादा है, बाउंड्रीज ज़्यादा है, चेंजिंग पॉइंट्स ज़्यादा है, वी कंसिडर देम एज अ हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स. So in such cases, जिस तरह आपका कोई इमेज ब्लर आता है, जैसे कि जो पिक्चर क्लियर नहीं है, तो उसका रीज़न क्या है कि उसमें जो ट्रांजिशन पॉइंट्स हैं, चेंजिंग पॉइंट्स हैं, दे आर नॉट क्लियर, बाउंड्रीज आर नॉट क्लियरली विजिबल. So if you pass such type of image derivative or differentiating filter, so what will happen that the low frequencies will be further lowered and high frequencies will be amplified with a higher amplitude. So that will create a difference between the lower and high frequencies. So that picture or image will become more clear. So we say differentiating filters are useful in enhancing rapid variations or transitions in a signal. One purpose for which differentiating filters are often used is to enhance edges in picture processing. कि आपने edges को enhance करना है. Again we say edges are corresponds to the changing points. So a black and white picture can be thought of as a two-dimensional continuous time signal, which is a function of t1 and t2, where t1 and t2 are the horizontal and vertical coordinates, and x of t1 t2 is the brightness of the image. इस कोर्स में limit ourselves up to only x of t. अब यहाँ पे सिर्फ ये पॉइंट्स नोट कर लें. विद रेफरेंस टू एन इमेज, slow variations in brightness in a particular direction are represented by the lower harmonics or lower frequencies in that direction. Let's consider an edge corresponding to a sharp transition in brightness that runs vertically in an image. Similarly, in contrast, since there is an abrupt variation in brightness across the edge, the frequency content of the edge in the horizontal direction is concentrated at the higher frequencies. इस ग्राफ की समरी सिंपली क्या है कि जो आपके पास इमेजेस हैं उनमें जो स्मूथ है, जहाँ पे वेरिएशन कम है, दे आर कंसिडर्ड एज द लो फ्रीक्वेंसीज, और वो पॉइंट्स जहाँ पे बाउंड्रीज हैं, जहाँ पे एजेस इन्वॉल्व हैं, दे आर कंसिडर्ड changing points. They will have the high frequency. Since the derivative at the edge of a picture is greater than in regions where the brightness varies slowly with distance, the effect of filter is to enhance the edges. The differentiator का काम, it creates a difference between the low frequencies and high frequencies. तो जहाँ पे low frequency components are already defined in the image, their amplitudes will be further lowered, and those components which are defined as high frequency components, their amplitudes will be further increased. So the difference between continuous and discrete will become more clear.
जी, अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन हो इस पैराग्राफ में? हेलो? जी सर। किसी का क्वेश्चन तो नहीं है इसमें? नो सर। ठीक है, तो पर्सनल चैट में मैंने काफ़ी देर पहले कहा था अवॉइड चैटिंग, और उसके बाद कॉन्टीन्यूसली चल रही है। ठीक है, तो कोशिश करें कि क्लास पे फोकस हो। Similarly, we consider one example from discrete time filters. Discrete time LTI filters also find a broad array of application. Many of these involve the use of discrete time systems implemented using general or special digital processors to process continuous time signals. In addition, the analysis of time series information, including demographic data and economic data sequences जो कि stock market में चलती हैं, such as a stock market average, commonly involves the use of discrete time filters. Often the long-term variation means that corresponds to the low frequencies. Similarly, so we say often the long-term variations which correspond to low frequencies have a different significance than the short-term variations which corresponds to the high frequencies, and it is useful to analyze these components separately. Here we consider one simple example of discrete time filter. Reshaping the relative weightage of the components is typically accomplished using discrete time filters. As one example of a simple discrete time filter, consider an LTI system that successively takes a 2-point average of the input values. जनरली हमने चैप्टर नंबर 1 में एक एग्जांपल ली थी एवरेजिंग फिल्टर की या एवरेजिंग सिस्टम की, कि सिस्टम क्या कर रहा है, आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सब का एवरेज ले रहा है। तो एवरेज लेने से क्या फ़र्क पड़ता है कि जो सिस्टम के अंदर ट्रांजिशंस हैं दे आर lowered, so it gives you a more smooth curve. So here we simply consider a 2-point average of the input values. So we say output is equal to 1 by 2 of x of n plus x of n minus 1, current value plus the previous value, इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड बाय 2 कर दें, दैट गिव्स यू अ, जनरली वी से इट इज अ 2-point averaging system. So impulse response of such system will be 1 by 2 into x of n equals is replaced by delta of n, and x of n minus 1 will be replaced by delta of n minus 1, because we said it is an LTI system. So output is equal to the average of inputs. So impulse response will be equal to the 1 by 2 of impulse plus the previous impulse. Now to find the frequency response of this equation, again we say that h of e raised power j omega will be, again we say it comes from eigenvalues and eigenfunctions, that h of e raised power j omega is equal to 1 over 2 to delta of n impulse का transform क्या है, that is equal to 1. And similarly, if the input is delta of n minus 1, then its impulse response is a raised to the power, frequency response is a raised to the power minus j omega. ये आगे properties पढ़ेंगे, फिर उसमें आपको clear हो जाएगा chapter number 5 में. So here you simplify this equation. This gives you e raised to the power j omega by 2 into cos of omega by 2. अब ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को अगर आप देखेंगे अभी, तो दैट गिव्स यू एन
अगेन अगर इस फंक्शन को प्लॉट करें, दैट इज e raised power j omega by 2 into cos of omega by 2 in MATLAB. So again we say, let's say omega is between minus 10 and plus 10. H1 is exponential minus j 0.5 omega and H2 equals to cos of 0.5 omega. H is equal to H1 multiplied by H2. Then we plot the absolute part and angle. So graphical result shows that is a frequency response of the 2 point. सर जरा कोड दोबारा दिखाएं, मैटलैब कोड। क्यों पिक्चर लेनी है? नो सर। सर ये H1 डॉट H2 क्यों है? H1 डॉट स्टेरिक H2 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए मैटलैब में डॉट स्टेरिक यूज होता है। अगर आप सिंपल स्टेरिक से करें मल्टीप्लिकेशन से तो फिर रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे। वो मतलब फिर मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन नहीं चलती उसमें, वो पॉइंट टू पॉइंट मल्टीप्लिकेशन होगी। ठीक है, क्योंकि मैट्रिसेस में यहाँ पे सारा काम मैट्रिसेस में, तो वी नीड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सो वी से H1 डॉट स्टेरिक H2। क्लियर? So the frequency response of this filter is of this form. अब इस फिगर को आप देख लें तो clearly shows that it repeats after every specific amount of time. ठीक है? Sorry, with reference to omega, it repeats after every fixed value, after every 2 pi basically. तो अगर आप यहाँ पे देख लें -4 और -2 के दरमियान आएगी, दिस इज -पाई विच इज इक्वल टू पाई किसकी इक्वल है? 3.14। ठीक है, सो दिस पॉइंट इज -3.14 एंड दिस वन इज +3.14। अब इस फिल्टर में और कंटिन्यूस टाइम फिल्टर में डिफरेंस आपके सामने क्लियर है, प्रीवियस का मैटलैब कोड में था कि in case of discrete time filters it repeats after every 2 pi, but in case of continuous time filters कोई repetition नहीं है। clear? So averaging filter is used to find the average आप क्यों ले रहे हैं? to smooth out the rapid variations. So as discussed in previous lecture, we say low frequencies for discrete time complex exponentials occur near omega is equal to 0 plus minus 2 pi plus minus 4 pi, and high frequencies occur near omega is equal to plus minus pi plus minus 3 pi and odd multiples of pi. So here we say this is a result of the fact that e raised to power j omega plus 2 pi n equals to e raised to the power j omega n. So that in discrete time we need only consider a 2 pi interval of values in order to cover a complete range of distinct discrete time frequencies. So as a consequence, any discrete time frequency response must be periodic with a period of 2 pi. So for the specific filter defined in the equation e raised to power j omega by 2 cos of omega by 2, so we see from the figure that h of e raised to power j omega is large for frequencies near omega equals to 0 and decreases as we increase omega towards magnitude of omega towards pi. फिगर को देख के आपको क्या लग रहा है, ये कौन सा फिल्टर है? जी कोई बताएगा? लो पास शायद, मेरे ख्याल से लो पास। कोई और आंसर देना चाहे? बैंड पास। हाई पास। हाई पास? हाई कैसे हाई पास? जरा इसको डिफाइन करें कि किस तरह हाई पास है। एक्स एक्सिस पे ओमेगा और वाई एक्सिस पे एम्पलीट्यूड है इसका। ठीक है, लो पास है सर, क्योंकि ये पाई वाली फ्रीक्वेंसी पे वो एम्पलीट्यूड 0 आ रहा है, मैग्नीट्यूड लो पास है सर।
क्योंकि So, पाई के करीब करीब इसका मैग्नीट्यूड 0 के करीब जा रहा है। ठीक है, और हाई कहाँ पे है? एम्पलीट्यूड्स कहाँ पे हाई है? जब ओमेगा 0 है। जब ओमेगा 0 है एंड इट इज अ मल्टीपल ऑफ 2 2 पाई। पाई। ठीक है, सो इन केस ऑफ डिस्क्रीट टाइम फिल्टर्स वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड दैट कि जो लो फ्रीक्वेंसीज हैं दे अकर अराउंड 0 एंड इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, एंड हाई फ्रीक्वेंसीज अकर अराउंड पाई एंड ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। अब जो भी आप इसको इनपुट सिग्नल देंगे, आउटपुट विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस मैग्नीट्यूड। तो इनपुट पे अगर जो भी फ्रीक्वेंसीज हैं, लेट्स से एट ओमेगा इज इक्वल टू पाई, they will be multiplied with a zero amplitude or with a very small value. So we say those high frequencies will be either eliminated or suppressed. Suppressed means को amplitude इतना कम हो जाएगा कि उनके होने या ना होने से सिस्टम पे फर्क नहीं पड़ता. And the low frequencies are around zero, which are with a maximum amplitude. So generally we say this represents a low pass filter. जो आपके पास एवरेजिंग सिस्टम है, एवरेज में आप यही कर रहे हैं ना कि जो आपके पास हाई एम्पलीट्यूड के डिफरेंसेस हैं